बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज के लेसन में हम क्या करेंगे डियर टीचर्स? आज का लेसन है हमारा रिव्यू का लेसन। इसमें हम करेंगे बच्चों के साथ कुछ चीज़ों को रिवाइज, ताकि आप उनको असेस कर सकें कि इन्होंने अभी तक पिछले वीक्स में जो लेटर सीखे हैं, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ की हैं, क्या उनको याद हैं या नहीं। सो आज का जो है टास्क वो ये है कि हम कुछ रिविजन करेंगे बच्चों के साथ, और टीचर फिर आपको देंगी किताब का सफ़ा जिस पे आप अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से अपने वो आर्ट क्राफ्ट का मटेरियल जो आपने पिछले वीक्स में बनाया था, जिसमें हमने सन का फ्लैश कार्ड बनाया था और टाइगर का बनाया था, वो तो जल्दी से ले आएँ ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। नाउ लेट्स सी इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट। सो टीचर्स, इफ़ यू हैव अरेंज्ड ऑल द प्रीवियस वीक्स वर्क ऑन योर टेबल, वंडरफुल। बच्चे बाद में इसको रिवाइज कर सकते हैं। अभी कुछ रिवीजन बच्चे मेरे साथ स्क्रीन पे करेंगे, एंड देन व्हेन वी कैन सी हाउ मेनी ऑफ देम कैन रिमेंबर दिस। सो व्हाट इज द फर्स्ट फ्लैश कार्ड? ये किस एक्टिविटी का था? हमने क्या बनाया था इसमें? हमने अपने हैंड्स को पेंट किया था, एंड वी मेड अ प्रिंट ऑफ अ पॉ। पॉ, पॉ। व्हाट इज द स्टार्टिंग साउंड? प। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फाबेट? P. Good. What is this? This activity we did for a quill. जब हमने चिकन या कबूतर के पर से लिखाई की एक्टिविटी की थी ना, क्विल, तो ये किस लेटर के लिए थी? Q और साउंड क्वा। फिर हमने बहुत क्यूट क्यूट से कॉटन से ये रैबिट्स बनाए थे। तो रैबिट्स के स्टार्ट की साउंड है र, और र के स्टार्ट का जो लेटर है वो है आर। Am I right? Good. What is this? This is a small flashcard of a sun. Or sun starts from the capital letter S. This is how teachers that we revise with them. What is this activity about? This is the activity about your teeth, and teeth, yeah, tooth starts from the capital letter T and the sound is T. So हमने पिछले वीक्स में 5 न्यू लेटर्स और उनकी साउंड सीखी, उनके बारे में बहुत सारी बातें की। There was P, Q, R, S, T. Well done. So teachers, if you have these already with you, perfect. Otherwise, आपने इंश्योर करने के लिए ये फ्लैश कार्ड्स भी अपने पास रखने हैं, ताकि जब बच्चे राइटिंग का टास्क कंप्लीट कर लें अपनी बुक का, तो आप उनसे इसको रिवाइज भी करवा लें, या उनसे कहें कि अब वो खुद अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आज तो वो उनको आप असेस करिए ना। ये असेसमेंट जो है इसलिए नहीं है कि आप बच्चों के लिए किसी किस्म का कोई टेस्ट दे रही हैं। ये असेसमेंट इसलिए है कि कहीं पर अगर कोई साउंड इस सेट ऑफ साउंड्स में से कंफ्यूजिंग है, या बच्चे भूल गए हैं, या कोई एक्टिविटी रह गई है, तो यू कैन कैच अप बिफोर यू गो टू द next activity. So if you want to pause this video, you can do that here, and then we can continue with the writing part next. अभी आगे देखते हैं कि अभी हमने क्या करना है। ये कौन सा कैपिटल लेटर था? P. So बच्चों मुझे बताइए आपके, is it a one stroke letter or a two stroke letter? First we make a standing line, then we come back up here and then make the face. Yes, the round, the semicircle face. So this is the capital letter P and its sound P. This is the capital letter Q. One stroke or two stroke? Two strokes. Very good. So how do we do it? First we make the round and a little slanting line in the corner. Q, qua. R. The capital letter R. One stroke, two stroke, three strokes. Yes. 1, 2, 3. Capital letter R, and the sound is R. Good. S. Oh, I just love this sound and this letter. S. Can you write it in the air? Is it one stroke or two stroke? One stroke. S. And the sound is S. Now this is the capital letter T. How do we make the capital letter T? Just like this. Standing line, then coming back up here, and then one sleeping line on the top, just like a topi. Yes. Top, T. Good.
So teachers, now you can give them this page to perform and complete this activity. ये किताब का सफ़ा है, इस पे अगर आप देखिए तो एक साइड पे कैपिटल लेटर्स हैं, सेंटर में कुछ वोकैबुलरी है एंड द साउंड. तो मेन टास्क हमारा नर्सरी क्लास में यही है कि इनको कैपिटल लेटर के साथ साउंड और वोकैबुलरी आ जाए, और ये वोकैबुलरी दरमियान में दी गई है किताब के सफ़े पे, उसके बारे में इनको बातचीत भी करनी है, क्योंकि हम इनकी लिसनिंग स्पीकिंग पे भी वर्किंग कर रहे हैं. तो आज टीचर्स, जब आप इन तमाम साउंड्स के साथ इंश्योर हो चुकी हैं कि इनको तमाम साउंड्स आ गई हैं, अगर आपको ये लेसन रिपीट करना है आप रिपीट भी कर सकती हैं, और अपनी जो वोकैबुलरी वॉल है उसके ऊपर जो आप लेटर का फ्लैश कार्ड लगाती जा रही हैं. बच्चों, कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया? कैन यू आइडेंटिफाई हियर? ये देखिए, हमने एप्पल, बी, कैट, डक, एलिफेंट, फ्लावर, जिराफ, हॉर्स, आइसक्रीम, jelly and juice, kite, lion, monkey, numbers, octopus, pumpkin, question, rainbow, snowman और tortoise या turtle. यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिए. Can you now tell me how many letters are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 letters are left. How many letters are there in the English alphabet, by the way? There are 26 letters. इसका मतलब है 20 तो हमने सीख लिए. So now let's move on, teachers. This is the extra practice worksheet in the description box. इतना ही टास्क अगर इन्होंने कंप्लीट कर लिया है कि वोकैबुलरी भी आ गई है, लिखनी भी आ गई है, बोलनी भी आ गई है, वोकैबुलरी को कहीं लिखा हुआ देख के रीड करना भी आ गया है साइट वर्ड्स के थ्रू, तो दैट इज वंडरफुल. दिस मीन्स दैट ऑल द स्ट्रैटेजीज यू आर अप्लाइंग इन योर क्लासरूम आर वर्किंग एंड चिल्ड्रन हैव लर्नड अप टिल नाउ ऑल द साउंड्स एंड द अल्फ़ाबेट्स जो आप उनको पढ़ा रहे थे. वक्तन फ़वक्तन अपने जो अल्फ़ाबेट का बोर्ड है उसको रिवाइज करते रहें, वोकैबुलरी को शिफल करते रहें और आइडेंटिफाई करते रहें कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को कोई साउंड भूल रही है, उसको रिपीट कर लें बिफोर यू मूव ऑन टू द रिमेनिंग साउंड्स एंड रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स. Continue with the lessons. Take care. Allah Hafiz.